Namaste. Good morning, children. This is your fourth chapter. Lesson name is Satsang ka Prabhav. The effect of the good relationship. Effect of the good relationship. Video number 1, the first video. Satsang ka Prabhav. This lesson, Gautam Buddha's lesson, Now we can see this lesson's meanings. The first one, Bhaibit, Darna. Bhaibit, Darna. That means fear. Fear. Second one, Achambit. Acharmi Dupna. That means to stun. Third one, Pachatap karna, Pachthana. That means to feel. Next one, Amit Kabina Mitne Wala. That means permanent. Next one, Shishyo Chelo. That means student. Okay, Gautam Buddha student. And disciple also can say disciple. Next, last meaning, Abaharan Jabardasti Chin Lena. That means to snatch. That means snatching. Now we can see lesson. The first para, Angulimal naam ek डाकू था. अंगुलीमाल नाम एक डाकू था. That means there was a robber. His name was Angulimal. उसका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे. That means when the people heard his name, then afraid him. Then they got afraid to Angulimal. Next, वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था. वह राहगीर means travelers. Okay, marker means skill. Okay, उंगलियों की माला means ungli means finger, mala means garland. The उंगलियों की माला means the garland. The making his finger garland. What is saying that line? वह राहगीरों का मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था means he killed the travelers. And wore their garland of finger. The garland of the finger. That means the finger's garland. Okay. Next, धन अथवा किसी वस्तु का अपहरण नहीं करता था. धन अथवा वस्तु का अपहरण नहीं करता. धन means money. वस्तु means things. Okay. Adva means and. Okay. अपहरण means snatching. Okay. The getting. Okay. धन अथवा किसी वस्तु का अपहरण नहीं करता था means he did not get their money and other things. Did not get their money and other things. He only killing the travelers, then cut the finger, then wearing the garland. Next, श्रीवस्ती के राजा प्रसेवजीत और उसकी प्रजा उससे बहुत भयभीत थे. श्रीवस्ती के राजा प्रसेवजीत और उसकी प्रजा उससे बहुत भयभीत थे. That means the king of Srivast and his people got afraid against him. When he heard the Angulimal name, the Srivast king and the people are getting afraid. Good. Now we can see next para. एक बार
एक बार उस जंगल से महात्मा बुद्ध जा रहे थे. एक बार उस जंगल से महात्मा बुद्ध जा रहे थे. एक बार means on time. Jungle means already you know forest. Mahatma Buddha you know okay. जा रहे थे means moving okay. That means once the Mahatma Buddha was crossing the forest. The crossing the that forest. तब उनके साथ रहने वाले शिष्यों ने बुद्ध को आगे बढ़ने की रोक दिया. तब मीन्स रहने वाले मीन्स लिविंग, शिष्य मीन्स स्टूडेंट ओनली यू नो वेरी वेल ओके. आगे बढ़ने की रोक दिया मीन्स स्टॉप द बुद्ध आगे सेइंग. तब उनके साथ रहने वाले शिष्यों ने बुद्ध को आगे बढ़ने की रोक दिया. और सेइंग देन द बुद्धा स्टूडेंट स्टॉप्ड हिम एंड सेड okay, don't go okay, please don't go forward, please don't go forward. The शिष्य said to गौतम बुद्धा. नेक्स्ट, उन्होंने बुद्ध से कहा कि इस जंगल से डाकू अंगुलीमाल रखता था. उन्होंने बुद्ध से कहा कि इस जंगल में डाकू अंगुलीमाल रखता था. That means the शिष्य said they said to Buddha, the robber Angulimal living in the forest, living in this forest like this. The Shishya said to Buddha. वह मनुष्य का वध करता था. शिष्य said to Buddha, वह मनुष्य का वध करता था means he killed the people. He kills the people. नेक्स्ट, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसकी बात अनसुनी कर दी. लेकिन गौतम बुद्ध ने उनकी बात अनसुनी कर दी मीन्स लेकिन मीन्स बट गौतम बुद्ध डिड नॉट हियर ओके गौतम बुद्ध डिड नॉट अग्रीड देयर वर्ड्स मीन्स शिष्यस वर्ड्स. वे आगे बढ़ते चले गए थे. मीन्स व्हाट मीन्स ही मूव फॉरवर्ड ओके. He moved forward. Gautam Buddha did not hear the Shishya's word. He moved forward the forest, crossing the forest. Good. Remaining lesson you can see next video itself. Now in this 2 para itself, some question answer is there. We can see now. First one, Angulimal Kaunte. Second one, अंगुलीमाल किसकी बनी हुई माला पहनता था. थर्ड वन, कौन अंगुलीमाल से भयभीत थे. द फोर्थ वन, गौतम बुद्ध ने किसकी बात अनसुनी कर दी. लास्ट क्वेश्चन, पृष्ठ संख्या 17 रोमती अभ्यास पूरा करो. पृष्ठ संख्या that means page number 17 Roman number 3 अभ्यास पूरा complete the exercise. So remaining 2 para is there. We can see next second video itself. Okay, recall the lesson. धन्यवाद. Thank you.